तत्सत् अद्य अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे द्विशतीतमे दयानंद आब्दे पिंगल संवत्सरे रवि उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठम्यां तिथौ अनुराधा नक्षत्रे शनिवासरे अद्य पवित्र वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थं च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जल को वेदी पर छोड़ देंगे। तत्पश्चात आचमन के लिए सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जल ले और स्वाहा के पश्चात उस जल का पान करें। ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा। सेकंड टाइम टेक वाटर एंड आफ्टर स्वाहा सिप इट। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। थर्ड टाइम ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री प्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन with your hands. After that, take water in leg palm or angus pressure. Body parts पर टच करना है, राइट से लेफ्ट, राइट हैंड्स की मिडल और रिंग फिंगर का प्रयोग कर दीजिए। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम पूर्वोर्मा ओजवस्तु, ओम मरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। दीप प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्धयोरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायाददे। Hold your hands. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। प्रथम संविधान। ओम अयं तयित्मा आत्मा जात वेदस्ते निधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नै जात्वेदसे मम। ओम समिधाग्निं दुवसतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना
अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचा यभिष्ठ स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे नमः. Next mantra we will chant 5 times and yet we will offer you ambition. Om ayanta yidma atma jata vedastene dasva vardhasva chedda vardaya चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेदया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्द वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेतया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्द वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेदया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्द वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेदया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयं तयिद्मा आत्मा जातवेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेद्द वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः. आफ्टर मंत्र ओम अदिते अन्मन्य स्वा ओम अनुमते अनुमन्य स्वा ओम सरस्वती अनुमन्य स्वा ओम देव सविता प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु. Agara Bhagavati, first left side, another right side. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Dannamama Om Somaya Swaha Idam Somaye Dannamama Om Prajapate Swaha Idam Prajapate Dannamama Om Indraya Swaha Idam Indraye Dannamama. Now we will chant morning prayer and evening prayer mantra. You offer samagri also. Om Suryo Jyotir Jyoti Surya Swaha Om Suryo Varcho Jyotir Varcha Swaha Om Jyoti Surya Suryo Jyoti Swaha Om Sajurdevena Savitra
सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नै प्राणाय स्वाहा इदमग्नै प्राणाय नमः ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणा वितरश उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्निनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नै प्राणाय स्वाहा इदमग्नै प्राणाय नमः ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। वेदा में परमं चक्षुः वेदा में परमं बलम् वेदा में परमं धाम वेदा में ब्रह्म चोत्तमम्। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी परम धर्म का हम सभी आर्यजन पालन कर रहे हैं। वेदोक्त ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र को हम संपन्न कर रहे हैं। हमारा वैदिक परिवार, बृहद परिवार, हम सभी शुभ मंगल अवसरों को, पुण्य स्मरणों को याद करते हुए रविवारीय यज्ञ के अंतर्गत प्रार्थनाएं करते हैं। आज हम इस वैदिक परिवार के लोग हम सभी के लिए परिवारों में सबके मंगल हो, शुभ हो, ऐसी कामना के साथ, स्वस्ति की कामना के साथ, शांति की कामना के साथ सभी के लिए मंगल कामनाएं परमेश्वर से निवेदन करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया, उस महा उपलक्ष्य को भी याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं वीर बलिदानियों से और क्रांतिकारियों से, हमारे श्रेष्ठ जनों के कारण आज हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पा रहे हैं, अपने वैदिक विचारों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। परमात्मा ऐसी दिव्य आत्माएं समय समय पर हमें मार्गदर्शन के लिए संसार में आए, उनके मार्गदर्शन में सभी लोग संसार से आगे बढ़े और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो। इन्हीं सभी श्रेष्ठ याचनाओं से होकर कुछ विशेष मंत्रों से हम प्रार्थनाएं करेंगे। अदिति जी, गत सप्ताह अदिति जी का भी जन्म दिवस था, उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना, आशीर्वचन के रूप में प्रार्थनाएं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। साथ ही साथ हमारे वैदिक परिवार के कटरिया जी के परिवार में उनके दोती का जन्म हुआ है, उसकी स्वस्थता, निरोगता, माता और पुत्री दोनों स्वस्थ निरोग रहे, इस कामना के साथ भी हम प्रार्थना करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओमा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोढा नड्वाना शोसप्ति पुरन्दिर्योषा जिष्णोरतिष्ठा
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा. I request you all, please come and offer your own oblation in sacred fire. और इसी सभी मंगल कामनाओं के साथ जुड़ करके भावनाओं से होकर एक एक आहुति सभी प्रदान करेंगे और चार चार के सीक्वेंस में आकर के आहुति दे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. ये इसके तीन विद्यार्थी भी आएंगे. आहुति देंगे. जियान आगे खड़े हो जाते हैं. आप भी आहुति. ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए. चलो आगे सामने. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा. शांति से लिखिए ऑपरेशन. ओम अग्नये स्वाहा इदमग्ने दण्डमम. ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाये दण्डमम. ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते दण्डमम. ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राये दण्डमम. ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये दण्डमम. ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दण्डमम. ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याये दण्डमम. ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः दण्डमम. श्रेष्ठ की आहुति प्रसाद के साथ. ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिषं यद्वायो न मिहाकरम् अग्निष्टचिष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे. अग्नये सृष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा. इदमग्ने सृष्टिकृते दण्डमम. बहुनाहुति के साथ
ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। Last three of the सामग्री। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होंगे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे
सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी पावन मंगल अवसरों को स्मरण कर कुछ पंक्तियां सभी के वेलबींग के लिए प्रयोग करती हुए बोलेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो, जगत के पालनहार, दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। मेरे भगवन पूरी हो। हम सभी ने सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं की, अब वैयक्तिक रूप से भी स्वयं की भावनाओं को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतिदिन अपने द्वारा प्रार्थना अवश्य करें। कैसी प्रार्थना हो इसका प्रारूप यहाँ पर छोटे से रूप में करेंगे। साथ ही साथ जो जो लक्ष्य मन में हम धारण किए हैं, हमारे इस वैदिक परिवार के सबसे बुजुर्ग हम कह सकते हैं, आयु में सबसे अधिक माननीय वीडी शर्मा जी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम सभी वैदिक परिवार के सदस्य उनकी स्वस्थता की, निरोगता की कामना करते हैं कि परमात्मा वह स्वस्थ निरोग हो करके हमारे बीच में बैठकर अपने आशीर्वाद से, अपने अनुभव से हम सबको सदैव मार्गदर्शित करते रहे। इन्हीं भावनाओं को मन में लेते हुए सीधे बैठे, सिट प्रॉपरली इन वन पोस्चर, क्लोज योर आईज और मन ही मन प्रार्थना दोहराएंगे। जो भी श्रेष्ठ कामनाएं आप करना चाहते हैं
ईश्वर हमारी श्रेष्ठ और सर्वे भवन्तु सुखिना वाली कामना को ही स्वीकार करते। इसलिए हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हमारा सत्य सनातन धर्म हमारे लिए यूनिवर्सल प्रार्थना करने की सदैव प्रेरणा करता है। आइए आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना दोहराएंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना आप सबकी ओर से बोलूंगा। त्वं हिनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूवि, अधाते सुम्नमी मही, अधाते सुम्नमी मही। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे ईश्वर, आप सत्य चित आनंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि के कर्ता हर्ता। हे परमपिता परमेश्वर, आप अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती है। प्राणी मात्र की, जीव मात्र की संपूर्ण श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप ही तो प्रतिक्षण पूर्ण करते हैं। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकारी है, उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डाल दी जाती है। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे जगत पिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपकी अमृत में गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हमसे दूर करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम लोगों में तो सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, जैसे कि क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, हम सभी आपके पुत्र पुत्रियां, बालक बालिकाएं एकत्रित होकर पवित्र अग्नि देवता के समक्ष पवित्र वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए स्वाहाकार की ध्वनि के साथ घृत की सामग्री की आहुतियां प्रदान। इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। यही हमारी प्रार्थना है। हे प्रभु, अपने दिव्य ज्ञान की से हमें आलोकित करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, अविद्या से विद्या की ओर ले चलिए और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। जो हमारा परम उद्देश्य है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, उस मार्ग के हम पथिक बने। इस मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं हमें रोकने का प्रयत्न करेगी। हम उन सभी बाधाओं को परे करते हुए आपसे याचना करते हैं कि हम आगे बढ़े, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त हो। ये अग्नि देवता हमें यही तो संकेत दे रहे हैं कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की आहुतियों को देते हुए आगे बढ़े, स्वयं प्रकाशित होइए। अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को प्रकाशित करना हमारा दायित्व है। हे प्रभु, हम सभी को बल देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि जीवन में हम इन कार्यों को कर सके।
हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव सब पर बनी रहे, यही बारंबार याचना है, प्रार्थना है, निवेदन है। हे कृपा सिंधु, हमारी श्रेष्ठता से युक्त निवेदन प्रार्थना को कृपा करके आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका कल्याण कल्याण। ओम शांति शांति शांति। आज के यजमान यज्ञ विधि पर बैठे हैं, हाथ जोड़ के बैठे, और बाकी सभी अपने स्थानों से मेरे साथ पीछे उच्चारण करते हुए इनके लिए मंगल कामना शुभकामना बोलेंगे। सभी बोले ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सबलाः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम शुभं भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं। शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत सबका मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। यज्ञ का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। भजन सत्संग का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। आप अपने जगह पर स्थान ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ आपकी स्वेच्छा हो अपने अनुकूल स्थान को ग्रहण करें। ओम स्वस्ति। माइक ऑन कर। Next we have a bhajan, bhajan by Keep it secure the table. Yeah, you know this. The bhajan should be in the PowerPoint. And the bhajan should be in the PowerPoint as the share same mode. आज से स्टार्ट होता है विषय ईश्वर से संग जोड़ी मानव, ईश्वर से संग जो ऋषियों से मुख मोड़ी मानव, विषयों से मुख मोड़ ईश्वर से संग जोड़ी मानव, ईश्वर से संग
विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले। शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग जो, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जो, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता। उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। केवल ध्यान संचय में रहना, विषय भोग सागर में रहना। केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में रहना। ये अंधों की दौड़ वहाँ, ईश्वर से समझो, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश संग वास किया कर। छोड़ जगत की होर मानव, ईश्वर से संग जो, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि। पाप कलश को छोड़ मानव, ईश्वर से संग जो, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जो। क्यों फिरता है तुम्हारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। क्यों फिरता है तुम्हारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा। ये है एक निचोड़ मारा,
ईश्वर से संग जो ईश्वर से संग जोड़ मान ईश्वर से संग जो अब भी जो तू चेत न पाया तो फिर तुझको ये जग माया अब भी जो तू चेत न पाया तो फिर तुझको ये जग माया देगी रे तोड़ मरोड़ मानव ईश्वर से संग जो ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जो विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ Thank you, Hajikar, for such a nice bhajan. The meaning of is connect with the God and leave all the evils from yourself. So thank you so much for that, Hajikar. I request Dr. Gulati ji for one more bhajan. And if time persists, maybe I'll request Deji as well for one small bhajan as well. तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का न ये तेरा न ये मेरा मंदिर है भगवान का पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान न ये तेरा न ये मेरा न ये मेरा हम सब खेल खिलौने उसके खेल हम करता रे खेल हम करता रे उसकी ज्योति सब में चमके सब में उसका प्यार रे सब में उसका प्यार रे मन मन में सब कुछ उसी महान का न ये तेरा न ये मेरा न ये मेरा तीर्थ जाए मंदिर जाए
अंगिन देव नाय रे, अंगिन देव नाय रे, तीन रूप में सामने के नयन मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना, हमें ज्ञान का पानी उसका, पानी उसी पे सब कुछ उसी महान का, न ये बेला कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे, जो जला हृदय में सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान रे, सरल हृदय शरण में के नादान भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का, ना ये मेरा, ना ये मेरा, मैं नहीं हूँ ये भगवान मेरा, भूमि उसी का, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान, उसी का, कुछ उसी महान का। Namaste. I'm singing a very simple bhajan. If anyone in the crowd knows it, you all can follow with me. चंचल मन नितो जपा खैर ओम जपा जपा खैर चंचल मन नितो जपा खैर ओम जपा खैर फल पच्ची खैर ओम जपा जपा फल फल चिन्ह चिन्ह घड़ी घड़ी देश दिन ओम जपा जपा चंचल मन नित ओम जपा ओम जपा जपा प्रात समय की सो कपिलामी संजय की पुल कितरा जनेमी प्रात समय की सो कपिलामी संजय की पुल कितरा जनेमी रोम रोम से निकले ओम जपा जपा चंचल मन नित ओम जपा
ओम जपाखर 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 गहरा सागर नैया जीवन धरनी ओम घिवैया गहरा सागर डूबती नैया जीवन धरनी ओम घिवैया आड़ खड़ेगी ओम जपाखर ओम जपाखर 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 चंचल मन नित ओम जपाखर ओम जपाखर 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 सारथत्व की खोज किया जा नाम सड़ 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 पिया जा सारथत्व की खोज किया जा राम सड़ 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 पिया जा आड़ खड़ेगी ओम जपा कर ओम जपा कर चंचल मन नित ओम जपा कर ओम जपा कर ओम शांति 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 Great. Thank you, Gulati ji, as well. Now we have Acharya Varun Devji. He's the visiting preacher from Nairobi, Kenya, and he will be the new resident priest in Seattle, Washington. And he's with our luck, he's here visiting us before going to Seattle. So I would like to welcome Acharya Varun Devji, and I request Dr. Gulati, Dr. Chandora ji, and Vishnu ji to please honor him with some dupatta and the book from Dr. Chandora ji. Yogesh ji, can you? Dr. Chandora ji, please you also. मुझे सुनाई नहीं देता भाई, आप क्या बोल रहे हो? Dr. Chandora ji, please come on the stage. So Acharya ji is a very spiritual person, and he's doing the preaching since many years and spreading the Vedic values and Vedic wisdom in the community. So we welcome you, Acharya ji, in the temple. Thank you so much for being here. Today, Acharya ji is giving the sermon, and his topic is from knowledge to liberation, Sretva, influence of life's ultimate quest. So over to you, Acharya ji. विराट जी एवं समस्त आदरणीय श्रेयस आलेकर चंदोरा जी,
Today we contemplate, we try to understand deeply how the right understanding of principle of Vaidwan in the Veda help us liberate from all suffering, from all ignorance, and to attain the infinite and eternal bliss, happiness, peace, mindfulness, and all the richness lives, which will make us able to spread the light of truth in the world. Oh, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. This mantra is from the last chapter of Vedic from the 40th chapter, 14th mantra. The last chapter of Yajurveda is also called Isha Upanishad, Isha Upanishad. And in this mantra, it is suggested in the Veda that with the right and true knowledge of Vidya and Avidya, one can liberate oneself from the grip of ignorance with the help of Vidya, one can attain immortality. So, how it is possible? We will try to understand that how is it that after knowing, after understanding the nature of avidya and what is avidya, and what is the difference between avidya and vidya, and after attainment of vidya, how can we be immortal? That all will be our quest, because ultimately we want to be liberate ourselves from the suffering, from ignorance, and to attain that state of happiness which will never perish. This is all our natural aspiration in our heart, in our mind, in our life. But if we don't have the correct understanding of the principles of Vidya and Avidya, we will always be misguided and misled. So let's start first. How is it possible with a small, short analogy so that we know the significance of Vidya and Avidya and where Trayatvad comes in, the principle of Trayatvad. If we don't have the knowledge of Trayatvad, why Maharshi Dyananji, after so many centuries in India, this concept, this principle of Trayatvad, which is there present in the Vedas, was covered. Why? Because after so many centuries, a great scholar, a yogi of Sanskrit appeared on earth, took birth. So that is our privilege. We are very lucky, very graceful that we got Maharshi Dayanandji, who gave us the proper, without any selfish
motive, he attained the highest knowledge of the Vedas and he imparted that knowledge to the whole society without least reserve in himself for himself. So let's start first what with the analogy so that we will be able to understand the significance of this principle. And many of you might know this story. Just imagine, suppose there is a big lake, very big lake, and in that lake there are thousands of fishes, creatures are living in that pond, in that lake. The fisherman comes with its bait and puts that string in order to catch the fish. Kindly switch off your mobile phones or put them on the silent mode. Then, after that, when that fisherman throws his bait in the lake, then there are some fishes which are not aware of that reality. They just are attracted to the bait, to the food, and they just jump on it. They just thrust on it. And then what happens next? They are caught and put in the net. And they, after some time, they die. There are some that when that bait is thrown, the net is there around them, but after being caught, they are aware they have been caught. They have that sense. The first category is those which are not aware of their foundation, that they are bondage now. Now they are prison, they are not aware of that. The second category, they are aware, but they don't know how to come out of that net, how to come out of that bondage. The third kind of people or fishes in the pond is who they know they are in the net and they know they have taken a wrong path. Now they are trying to liberate themselves. They have started their quest. How can I liberate myself from this net, from this bondage, from this prison? Then this state is better than the previous one. Now the fourth kind of fishes in the pond or people who are aware completely, who has this knowledge, who have seen this thousands of times in front of them, that it is a bait, this is all pre-planned and we will be caught if we will go near to that. So the fourth category of the fishes or the people are those who are aware, who has the right knowledge, who have the correct understanding of the principles of the Vedas, of the knowledge of the Vedas. They know why this came to me and what it will be the consequence. They know. So they don't go near to that. They don't get attracted to that bait, to that food. The third category is of the jigyasu, who are the seekers of the truth. They go here, they go there, they go this guru, they go that guide, and after going so many places, now at the end, at the culmination of their journey, they come to a point where they find Rishi Dayanand, who have given the correct and right knowledge of the Vedas. So, in which category we have to observe ourselves. We are so blessed that we have found at least the path. Now it is only up to us how deeply and how sincerely we walk on it. The degree of sincerity will decide our progress. So let's start why Traitvad.
is important in our life in order to make the final ultimate quest of liberation and moksha. Why? What is Traitavad? First of all, we must know that Pramanas in the Vedas, we have to find out, and Maharishi Dayanand has done all that efforts in Satyat Prakash and Rigveda Bhashya. If we take a little effort, we take a little time out of our schedule and try to understand what is the meaning of Traitavad and what Maharishi Dayanand is telling about it, giving reference from the Vedas, then it will be more easier to understand the principle. So Traitvad means the existence of three substances, three entities. The first entity, existence or being is Ishwar. The second, Jivatma, Jeev. And third one is, all you know, Prakriti. So now the question comes, there are so many concepts and ideologies which say, and all of us know, somebody said, I am Brahmasmi, Mahi Brahma. And giving the quotation from different Upanishads. But when Maharishi Dayanand he explored the Vedas, he completely mastered the Sanskrit. Then he came to know that how much blunder the people in the past had made about understanding the Vedas. Then he gives in Satyat Prakash one quotation, one reference from the Veda, from Rig Veda, first Mandal, 164th Sukt, and the mantra is, all of us, we have heard this mantra so many times, but we need to understand the meaning. The principle of Traitvad is there codified, it is there in this mantra. And this is Dva Suparna Sayuja Sakhaya Samanam Vriksham Parishasvajati. We must have heard this mantra. Tayoranyah Pipalam Swadvatyan Asharanyo Abhichakashiti. So what is the meaning of the mantra? Here Maharishi Dayanand is giving the meaning, जो ब्रह्म और जीव, द्वा, it comes, द्वा means दो. So already duality is there between Ishwar and Jeev in the Veda. Why, if Jeev is the Brahman, why in the mantra the duality will appear? Because in reality it is there. Jeev is different from Ishwar. How? Maharishi Dayanand is giving very logical answers to that quest. Everyone knows Ishwar is infinite. Are we infinite or limited? We are limited. We live at our soul, it is in the body. We cannot say that I am also there. Can we say that I am there? When I am here, I cannot be there. It is Ekadeshiya, one-pointed. And Ishwar is omnipresent everywhere. So when we see, if we observe it with our understanding, logical understanding, we will find out the existence of Jeev and Ishwar is different, not the same. Then what mantra says? जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश हैं.
how they are, there is some means common nature which is we find out in Ishwar and Jeev. What is their Chetanata? And what is Chetan? Can anybody guess? What is Chetan? Yes, conscious, who has jnana, knowledge, awareness, that is Chetan. Can you say this podium is Chetan? No. Why? Because there is no awareness, there is no knowledge. We can, Jivatma can use it for our purposes, but it cannot use us. Why? Because it does not have that awareness. The wheat flour is jad. Jad means which does not have any kind of awareness. So from that point, there is some sadrishata, means some commonness, similarity is there between Ishwar and Jeev, and that is from the point of Chetanata. Also, Atma is, Jivatma is pure. Ishwar is also pure. But now what does mantra say in the next word? Sayuja. What is the meaning of Sayuja? The most common nature of Ishwar is it is Vyapak. Everywhere. It is pervading everything. But Jeev is Vyapya. Vyapya means it has only one pointed existence. It cannot be everywhere. The Ishwar is everywhere. It is pervading even Jiva and whole nature. Sakhaya, they are like friends. Now it says they are eternal, their existence is eternal and anadi, forever. Now it comes Vriksham. What is the meaning of Vriksh here? Is Prakriti. Mool Prakriti. The matter, the basic substance out of which this whole Prakriti is made. Karan Roop Prakriti. Sattva, Rajas, Tamas. So, when this Prakriti, the Jiva is enjoying the fruits of Prakriti, but Ishwar is taking care of all the karmas, actions the Jiva is doing on this tree, on this nature. So it is clear from this mantra that the existence of Ishwar, existence of Jiva, and existence of Prakriti is different. They are three different entities. So now this reference, why Maharishi Dayanand is giving in the Satya Prakash references, because with Pramanas always Rishi talks. Rishis, they don't talk without Pramanas, otherwise there will be no belief, there will be no faith. And whatever is true must qualify different examinations. What are those examinations? It should be according to the Vedas. If any concept or principle is violating or contradicting the principles of the Vedas, it is not universal truth. The second, from the Shrishti Kram. If suppose someone says that at that time people used to say that, oh, the earth is square, not circle, not round. Because their understanding about earth was not correct. But in the Vedas, who will follow the principles of the Vedas, the knowledge of the Vedas, will find out that the Shrishti Chakra, the Shrishti Karma, Prakriti, creation, bearing of the bearer of the creation and the Pralay, apocalypse. And after this again creation will be there. So whatever is there in this, on this nature, in this earth, will follow the universal principles.
and those are there in the Vedas. For example, everyone knows every effect has a cause. If there is a smoke, the fire is there. What is the cause of fire? The cause of smoke? It is fire. Everyone knows. But somebody has seen it before. Only then one can infer that there must be a fire if he sees a smoke. The same way, there are three causes we should know. If we don't know these three causes, we will make amalgam of different principles. First is, we should know what is the function or working or action of Ishwar in this nature. What is our action and what is nature's contribution. So the first is Nimitta Karan. Who is the creator? Like we are duffing the floor in order to make chapati. So we are Nimitt, cause, banane wala. Then Upadan means the substance which is used to create. That Upadan, that means is the nature, Sattva, Rajas and Tamas. These three elements, fundamental elements, which then further molded into different types of Panch Mahabhut we see around, and Janendriya and Karmendriya. Then the third cause is Sadharan Karan, which is used like God is using, like we are the Jivatmans, we are also the creator in ourselves. We can create with this substance which is given to us different kinds of, like a house, like rails, aeroplanes. We are also creating in our world. But we are not the Upadan Karan. We are only creator. So all the general means by which, like when we make the chapati, we use water also, we use heat, fire. So that way, whatever is being used in order to make the final product, which we call the Prakriti, the final result of creation, that is the Karya Roop Jagat, which is visible to our eyes. So when we know these are the three causes and what is the working and action of the Ishwar, we will not deviate from the path. If we know that Ishwar and Jeev cannot be one, that is the logical derivation, we got it from the principle of the Vedas, then the percentage of error will not be there. Otherwise, there might be some time when we will meet different kinds of people who will try to influence us with different kinds of ideology, and those ideologies will not be matched with the principle of the Vedas and the knowledge of the Vedas. And if we are not enough stationed and established in the principles, if we have not done the contemplation, that hard work before we go to the society in order to spread the light of knowledge, the light of truth of the Vedas, what will happen? Our faith will be shaken and we will be easily convinced by anyone. And in that state, we are lost. Then the right understanding of the Vedas cannot reach the common people. It will be limited only to those who have attained it by their sincere efforts of Manan and Nididhyasan. So the here need to understand the Traitvad is most significant, the initial
milestone in order to progress further in the sadhana. In order to attain the mukti, the liberation, the moksha, this concept of Trayatvad that Ishwar is different from Jeev, from me, I am Jivatma, I am Chetan Swarup, Ishwar is Chetan Swarup, but Ishwar's nature is infinite in different aspects, in qualities. Ishwar is, if there is impurity in us, isn't it? In us means we are identified with the nature, completely identified. We do not most of the time consider ourselves as Atma. We most of the time we consider ourselves as the organization of ideas, organization of the means we attain, we gather in our life, which means that we have not identified ourselves as the Atma, as the soul. But Ishwar is forever free and liberated. He does not need, he never comes indulged in the Prakriti because he is the creator. When we are driving the car, we know I am driving the car. The car cannot go out of control without our willpower. So, in the same way, this whole Prakriti, the whole universe cannot go out of the control of the Ishwar. Because why? Ishwar is omniscient. That is his characteristic. He has the whole knowledge of the everything. He is omnipotent. Only then look at just observe the nature, how powerful it is. In one moment, earthquake comes, storms comes, and the earth shakes. There is devastation. Why? And because of that few moments, how powerful Ishwar is, we only know about this earth, these little galaxies, who has created this whole universe which is still expanding out. How powerful that energy must be, that intelligence must be, and we are thinking that we are that. We are making that confusion in ourselves. How can we do that? So, the initial step in order to progress in our spiritual life is to understand that I am Jeev, I am limited in knowledge, I am limited in energy, I am limited in consciousness, I am limited in happiness, I am limited in everything, but Ishwar is infinite. There is no limit. He is Anant. So when we have this logical understanding in our mind that he is making everything possible out of his infinite consciousness, then only we can rightly approach him. If we know the Prakriti Jad, if we have understood that if we say all is Brahman, then the error will come because there are doshas in the Prakriti. There are impurities in the Prakriti. So, is it feasible to say that Ishwar is with doshas? Will we accept that concept or principle which says that God, Ishwar is impure? Then if we do that, we will contradict our principles. So Maharshi Dayanandji gave wonderfully, he had worked hard, strenuously he worked hard to study Vedas and gave us the right knowledge of the Vedas. And Traitvad, we need to understand, sit and understand what is the correct meaning of Traitvad, how practical it is. Because if we don't understand the practicality of Traitvad in our life, then spiritual life, spiritual progress will not be attained. So, and the final ultimate aim of our life is, as it is said, Ishwar. To realize Ishwar. To first, the milestone of that attainment of that aim is to realize first
the nature of Prakriti. To understand the Prakriti, only then we are able to understand ourselves. And then when we have realized our, identified our true self, our real eternal self, soul, Atma, only then we will know what is Ishwar. So I urge to all of Aryas who are sitting here, more and more we do Swadhyay or Satyat Prakash of Rigvedadi Bhashya Bhumika, of the scriptures, Ash Granth, who were written by rishis in order to get the right knowledge, and with the right knowledge, we are surely to find our goal, to attain and realize our goal. That is that liberation, that moksha, infinite happiness, bliss, eternal bliss, for which we have taken this birth. Or otherwise, we are given this birth to attain that. That is the prayojan. Bhog and upwork. Bhog means to get the fruits of our past karmas. That is bhog. And upwork means mukti. Only for that reasons we have given this life. And if we will not understand the meaning of life with the correct understanding of the principles of the Vedas, what will happen? The life will be miserable. So we have to make our life better, noble, and then we can make the life of the society better. धन्यवाद सबको सादर नमस्ते. Summarize it in English. Thank you, Acharya. I can speak from my heart today. First of all, today's lecture was very important to discuss Traitwad. Maharishi Dhanand did brought that out from Vedas that Traitwad is the true. In those who are children and some new beginners, I would like to summarize that Traitwad means three eternal entities which never dies, which never borns, and which exist forever. They all three have their own nature. First one is Ishwar, second is Jivatma, and third is Prakriti. We often get confused between these three, which a lot of other religions and sects have tried to come very close, but they either got confused within the sects within the Vedic term, they got confused, or the other religion have really completely different sense how they interpret things. For example, Christianity talks about Father, Son, and Soul, which have, and they are never able to explain the characteristics of all three in a deep manner. In Ved, Ishwar, Jeev, and Atma are Maharishi Dhanand bring that out and spread the true message of Ved. In Dvaitwad, there some of the sects consider God and Atma are the only two things. In Advaitwad, they just only consider just Ishwar or just Atma is the only thing existed in, and always thing which exists and never get destroyed. Some also get confused by interpreting Vedas that Ishwar Sa Atma. So they consider Sa word as Jaisa Ishwar, Vaisi Hi Atma. Means ईश्वर को भी दिखाई नहीं देता है, आत्मा भी दिखाई नहीं देती है, तो उन्होंने ये इंटरप्रेट कर लिया है कि ईश्वर आत्मा एक जैसे हो गए. ठीक है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा भी कभी आत्मा जब शरीर धारण करती है पर स्टिल एग्जिस्ट, तो उन्होंने उनको एक समान मान लिया है. परंतु वो उनका ईश्वर का नेचर और आत्मा का नेचर
पूर्णतः एक समान नहीं है। ये हमें सत्यार प्रकाश में पूर्णतया हम पढ़ें और वेदों का स्वाध्याय करें, उससे हम यह जान सकते हैं। आचार्य जी also covered the nature of true characteristic of nature as well. नेचर बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, फिर पुनः बनता रहता है, और यह भी सत्ता है जो हमेशा से एग्जिस्ट रहती है, बनती है और चलती आ रही है। इसमें हम ईश्वर दोष कहें कि नेचर बिगड़ती रहती है, फिर दोबारा बनती रहती है, ईश्वर कमाल करता रहता है, तो यह भी टॉपिक स्वाध्याय के लिए बहुत जरूरी है। आप इसे पढ़ें और समझें और जानें। सत्याप्रकाश से आप शुरू कर सकते हैं, फिर वेदों में आप डीप डाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वांट टू recognize our true friend and a very dedicated volunteer of our temple. That is Sandeep Goswami ji. Sandeep Goswami ji has been actively volunteering for the temple in last 6 months, and he has shown a lot of courage to those who are actually connected to temple for years. They have a dedicated service of a volunteer can be without any path, without any designation. He has shown a real commitment. हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं वैदिक टेम्पल में, और उनसे दिन प्रतिदिन और वीकली सीखने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है कि कैसे आप अपना धैर्यवान स्वभाव के साथ साथ आप पुरुषार्थी वॉलेंटियर भी हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दीप्ति मुंजाल और डॉक्टर विजया अरोड़ा जी को मंच पे उनसे आग्रह करता हूं कि आए और संदीप गोस्वामी जी को सत्यार्थ प्रकाश देकर सम्मानित करें। संदीप जी। Why we chose Sattar Prakash is the next milestone for him. Maybe he will, with his Swadhyay, maybe with his Swadhyay dedication as well, he will prove that he is a true Arya Samaji, a true Vedic Dharmi, which have joined uh, and become part of our team. Thank you so much, Sandeep ji. Next, I have important dates to announce. First of all, the major event of Atlanta Vedic Temple, which is Mahayajna. Mahayajna is this year, we are dedicating the Mahayajna to Atharvaveda, one of the four Veda. It is on March 28th. April 28th. Yeah, it's just few weeks left. April 28th, our team is dedicatedly preparing for this. We will like as many members, as many volunteers, as many guests and friends to be invited to this event. This year has already been special for us for being the 200th birth anniversary of Maharishi Dayanand. So the more participation, the more message we are able to spread around in greater Atlanta area. Second, in month of July, from 19th to 21, we have Mahasammelan. This year's Mahasammelan is in New York. We want as many participants from greater Atlanta area to come with us, meet with Vedic scholars, meet with Arya Samaj volunteers around the North America, as well as get an opportunity to learn the new ideas from other Arya Samaj and share our ideas with them, how we can propagate the knowledge of Ved and propagate the Arya Samaj principle around the country. Okay.
All right. Next, we have a meditation session, which will be formed in the guidance of Swastiji. I will request everyone to turn their cell phone off, turn them to mute. Those who have minors, if they're okay, they can keep them calm and quiet. Please be with us. And if you think they will not be able to stay still for too long, please you can step out and or hand them over to their loved ones outside. Thank you, Swasti. Namaste everyone. We will do Om meditation now. Please sit straight. Close your eyes gently. Relax your face, neck, and shoulder. Relax. We will recite Om 3 times. Inhale. Second time, inhale. Third time. Breathing for a few seconds. Inhale deeply and exhale slowly. You all are pure and eternal soul. For the sake of your own peace and happiness, please drop all mental negativities, such as habit of comparing yourself to others, anger, fear, malice, grudges. Drop all. Now inhale deeply. Exhale slowly. Again, inhale deeply. Exhale slowly. Now inhale deeply. Exhale forcefully. Hold your breath outside as per your comfort. Focus your attention on holding state. Release the hold. Do normal breathing for a few seconds. Focus your attention in nostrils. Please do deep breathing. Watch your breath going inside and coming outside.
Ishwar, God is giver of this breath. Accept this. Accept His holy presence within us. By maintaining this truth that Ishwar is within us, please chant Om silently in your mind at your own pace. Pray for everyone's peace and happiness. Sarve bhavantu sukhinam. Sarve santu niramayam. Pray. We all are children of one divine mother. We all belong to one family. Feel that oneness in others. Feel grateful that you got an opportunity to meditate. Prepare yourself to get out from this meditation practice. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your palms together, rub your palms
So cover your eyes with your palms. Open your eyes. Remove your palms. Thank you, Swati. And now I'm going to request Holy Spirit Ari to perform the arti for today. Let us stand up for the arti. I would request all the children and youngsters to be in the front so you can read out the summarized English summary of the arti. Closing session. Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो प्यारे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति हरे आवे सुख संपत्ति हरे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे नाथ पिता तुम मेरे प्रभु में किसकी स्वामी शक्ति प्रभु में किसकी तुम बिन दूजा प्रभु बिन और न दूजा शरण में जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण तर्यामी पापी तुम तर्यामी आने ब्रह्म प्रवेश आने ब्रह्म ईश्वर स्वामी स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी पिता तुम हो करो सबके नामवती स्वामी सबके नामवती किस बिनु दया मैं किस बिनु दया मैं सी दो सुमति ओम जय जगदीश हरे तीन शब्द मेरे स्वामी तुम शब्द मेरे अगली सब रामा अगली रंगी विषय विकार मेरा देवा स्वामी कष्ट भरो देवा शरणं संतने की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन सब तेरा स्वामी सब कुछ तेरा
Something kind of our is something kind of all to the beast, to the beast, and Om Deus Tiram Kadiksham Shakti Piti Tiru Shadari Shanti Vanaspadaya Shanti Vishri Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shanti Deva Shanti Samana Shanti Retri Om Shanti Shanti Shanti. God, by your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe. The entire universe to be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Om Annavati Panchasya Devata Ivasya Shashina Pratyadata Isharu Shambhu Dehi Dvipadi Chatushvade Yendagishwamindavo Amapuri Gandado Cholo Granto Pustikarako Apanataka Kalyan Kanu तो पाए मनुष्य और जो पाए पशु आदि में ते धारण करो Go on, Race give food and charity. May all living beings be blessed with energy and food. Okay, Bush. Yo, boy! Very happy Jai मर्यादा श्री रामचंद्र जी की Jai योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की गुरुवर स्वामी विवेकानंद जी की Jai महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की Jai संसार के सभी श्रेष्ठ Jai संसार के सभी विद्यार्थियों की आज के यजमान की आयुष्मान वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन को सादर नमस्ते जी. Please take the RDN and join us for the side. Volunteers, please help clean the building. The food is on the other building. Give it to me. Say thank you for today's session. Say thank you for today's session. Say thank you for today's Thanks for joining us today. Namaste.
Say namaste and sign off. We'll see you again next week, same time. ठीक से हमें ठीक से कोई बात नहीं है ये बोल understand it all. Hey, I